ठीक है, चलो हम इसी का रिकैप कर लेते हैं फिर आज। सो बेसिकली हम लोग कर रहे थे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, सही है। और इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हर वैल्यू का निकालते हैं अपर या फिर लोअर बाउंड, ठीक है। अच्छा, अब हाउ डज दैट वर्क? नाउ व्हाटएवर वैल्यू दैट वी आर गिवन विल ऑलवेज बी टोल्ड कि वो किस पे राउंड ऑफ हुई है। अब लेट्स से हमें पता चलता है 37.4 meters, and this the question tells us that this is correct to the nearest tenth of a meter. कोई भी वैल्यू अगर 1 डेसिमल प्लेस पे ना तो वो डेफिनेटली इट्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ मीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं। वो होती हैं आपका, where did I write it? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। हाँ ये, सो 10th is 0.1, 100th is 0.01, 1000th is 0.001, ठीक है। मतलब इसको अगर हम दोबारा लिख लें तो अच्छा हो जाएगा जरा। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 325.1796, ओके। सो वी ऑल नो कि जो ये 5 है हमारा, ये हमारा यूनिट्स है। ये जो हमारा 2 है ये हमारा टेंस है। 3 जो है वो हमारा हंड्रेड्स है। इससे पहले भी अगर कोई वैल्यू होती है लेट्स से 4, वो हमारा थाउजेंड्स होता है। और इसी तरह हम पीछे जाते रहेंगे तो 10,000, फिर 100,000, फिर आपका सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेसिमल के बाद क्या होता है? डेसिमल के बाद ये जो 0.1 आप देख रहे हैं ये आपका 10th होगा, ठीक है, TNTH। 7 जो आप देख रहे हैं ये आपका होगा 100th। 9 जो आप देख रहे हैं ये होगा आपका 1000th, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को, जैसे इसको हम 10th इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया, हमने 1 को 10 से डिवाइड कर दिया, सो इसलिए दिस इज इधर वी कॉल इट 1/10 और वी जस्ट कॉल इट 10th। इसी तरह से इसको हम 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज 1/100, so either we call it 100 or just 100, and इसी तरह से 1000 and 10,000. So 37.4 meters is basically correct to the nearest 10th of a meter. अब using this the question can ask you what the upper bound is, ठीक है, and using this the question can ask you what the lower bound is, सही। So upper bound के लिए एक बड़ा इनको करने का एक standard procedure है, especially when you're calculating upper bound and lower bound. Obviously things get complex जब आप इन वैल्यूज को यूज करके, आप प्लस करके माइनस करके आप आगे कुछ चीजें निकाल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन सम केस आपको स्पीड का अपर बाउंड चाहिए होगा, लोअर बाउंड चाहिए होगा, देन हमें जरा देखना पड़ता है कि किसका अपर बाउंड लेना है, किसका लोअर बाउंड लेना है। लेकिन अगर सिर्फ एक वैल्यू है और उसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड चाहिए, देन थिंग्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो व्हाट यू डू इज यू लुक एट व्हाट इट्स राउंडेड ऑफ टू। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ मीटर का मतलब 0.1। 0.1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, सो वी आर लुकिंग एट 0.05, ठीक है। अब 37.4 इज द वैल्यू इन क्वेश्चन। इफ यू वांट द अपर बाउंड तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने 0.05 निकाला है आप इसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। सो दैट मींस यू आर लुकिंग एट 37.45। इफ यू वांट द लोअर बाउंड तो आप इसमें लेस कर दोगे, दैट मींस यू आर लुकिंग एट 37.35 meters. So if you want the upper bound, it's pretty straightforward, कि ये हो जाएगा 37.45. If you want the lower bound, again pretty straightforward, कि हो जाएगा 37.35, ठीक है। ये एक एग्जांपल थी, let's do more examples. Let's say you're given कि टाउन है, उसकी पॉपुलेशन है 425,000, let's say 600, और मैं आपसे कहूँ कि this is correct to the nearest 100, ठीक है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि दिस इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। इवन अगर क्वेश्चन हमें नहीं भी बताता तब भी हम बता सकते हैं कि हाँ दिस इज करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। सो इसका अगर हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड चाहिए तो इसको हम कैसे करेंगे, हियर्स व्हाट विल डू 425,600। नियरेस्ट 100 का मतलब कि 100, इसको डिवाइड किया 2 है, सो वी लुकिंग एट 50। अपर बाउंड चाहिए तो 50 प्लस कर दो, सो दैट मींस ये हो जाएगा 425,650। लोअर बाउंड चाहिए तो इसमें से 50 माइनस कर दो तो हो जाएगा 425,550, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके बड़े सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हमेशा आते नहीं हैं, ठीक है। समटाइम्स थिंग्स गेट स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें काम करते हैं इस तरह का एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है ना। दोबारा कर लेते हैं, ये सवाल कर लेते हैं और ये सवाल भी कर देंगे सर।
हमारा अच्छा थरो रिकैप हो जाएगा। ओके नाउ so it says here that the length of a rectangular rug is given as 0.9 meters correct to the nearest 10 centimeters. Okay, now अब यहाँ पे जरा एक twist आ गया. This is although 0.9 meter but it's saying it's correct to the nearest 10 centimeters. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. We'll come back to this. The width of the rug is given as 0.6 meters correct to the nearest 10 centimeters. So again problem आ गया. Not a problem that we can't fix. Obviously we can fix it. So how do you guys suggest I fix this problem? एक है 0.9 meters correct to the nearest 10 centimeter, एक है 0.6 meters correct to the nearest 10 centimeter. कैसे fix करूँ मैं इसको? Convert to centimeter by multiply by 100. Yeah, so it's best that I convert both the values to centimeters. ठीक है, so 0.9 meters कैसे convert करेंगे? चलें ये भी बताएं जरा, देखो आप लोगों को याद है conversions या नहीं? Multiply by 100. Multiply by 100. So ये हो जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर और जो 0.6 हम देख रहे हैं मीटर्स वो हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर. अच्छा, अब हमें निकालना है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड. So here's what we're going to do. They're both rounded off correct to the nearest 10 centimeters. So 10 को हम करेंगे 2 way split, तो 5 आ गया. Upper bound के लिए we'll add 95, lower bound के लिए we'll less. So here's 85 सेंटीमीटर. अच्छा, जब भी आप कोई वैल्यू देखो और आपको ये अंदाजा हो जाए कि हाँ ये अपर बाउंड लोअर बाउंड का सवाल है, don't worry about what the question is asking for. You find the upper bound and lower bound immediately. ठीक है, even अगर question आपसे सिर्फ एक ही बाउंड मांग रहा है तब भी आप दोनों निकाल लें. हो सकता है किसी एक पार्ट में एक नहीं तो दूसरा काम आ जाए. ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लिया. Now let's look at part A. Part A says write down the upper bound in meters of the length of the rug. अच्छा, length 0.9 थी और width जो थी वो 0.6 थी. तब 0.9 का जो अपर बाउंड है वो है तो 95 सेंटीमीटर, बट द क्वेश्चन वांट्स अस टू राइट इट इन मीटर्स. तो कोई बात नहीं, all we got to do is we got to take 95 divide by 100, so we're looking at 0.95 meters. ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर टू पार्ट ए. अच्छा, here comes part B. Part B says find the lower bound in meters of the perimeter of the rug. Okay, now perimeter एक dependent value है, ठीक है, it's not an independent value. ठीक है, it comes as a result of adding multiple values. ठीक है, so formula for calculating the perimeter of any rectangle is basically twice of length plus width. Now we know for a fact कि ये 2 तो कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, हम इस 2 को नहीं change कर सकते. This is always going to be there. Now length plus width are the values that we're going to play around with. Now you want to make sure that your perimeter is as less as possible. ठीक है, you want the lower bound of the perimeter. So what are you going to do with the length and the width? बताएं जरा. Use the lower bound. Yeah, you're going to use lower bound. ठीक है, so perimeter is equals to twice of length plus the width. The lower bound, remember I said कि lower bound भी आप हाथ के हाथ निकालना, you never know when you're going to use it. So you're looking at 85 plus 55. So 85 plus 55 is 130, 140. 140 को times 2 करोगे, so 280 हो जाएगा. 280 सेंटीमीटर है, याद रखो. You need to convert it into meters because that's what the requirement of the question was. So we're looking at 2.80. अच्छा, ये भी आपका एक बड़ा देखा जाए तो आसान सवाल था. ठीक है, now let's see what a difficult question may look like. ठीक है, in a difficult question you may be asked to, जैसे एक स्पीड वाला सवाल था which I'm trying to find. चलो ये वाला कर लेते हैं पहले जरा. ये कर लेते हैं, फिर एक स्पीड वाला सवाल भी और करेंगे. Okay, now let's see what it says. So it says in the diagram the shaded area represents a rectangular picture frame. So yeah, shaded area को भी हाथ क्या देखते रहो. The outer rectangle is 32 by 20. The inner rectangle is 26 by 14. All measurements are correct to the nearest centimeter. ठीक है. Calculate the lower bound of the perimeter of the outer triangle. Okay, so first let's write down all the dimensions. ठीक है, ये 20 है. 20 का अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, 20 का अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए हम 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे which is 0.5. why 1? because nearest, अच्छा हाँ ये भी सुन लो, nearest सेंटीमीटर हो, nearest मीटर हो, nearest किलोमीटर हो, nearest डिग्री हो, nearest आवर हो, उसका मतलब होता है 1. ठीक है, so 1 divided by 2 is 0.5. so we're looking at 20.5, 19.5, इसी तरह से 32.5,
31.5, इसी तरह से 14.5, 13.5 और इसी तरह से 26.5 and 25.5. Okay, now let's see what the question says. It says calculate the lower bound for the perimeter of the outer triangle. Outer triangle का मतलब ये जो मैं अब highlight करने लगा हूँ. Let's say इसका आपको क्या चाहिए? इसका आपको lower bound चाहिए. So if you want the lower bound, it's pretty simple. आप dimensions वैसे तो लोगे आप 20 and 32, but you're going to take the lower bound of 20 and 32. So that means you're going to take 19.5 and you're going to take 31.5. So here's what we're doing. Twice of 19.5 plus 31.5. Can anyone work this out and tell me क्या answer आ रहा है, please? $20, $20 and 31 is 51. 102? Yes, sir. 102 meters. ठीक है. Sorry, 102 centimeters. अच्छा, अब ये आपका पार्ट 2. अब ये पेपर 2 का सवाल है, बाय द वे. लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि पेपर 1 पेपर 2 में आ सकता है. और अगर ये पेपर 2 में आ गया, दैट मींस पेपर 1 में मुश्किल से 1-2 मार्क का होगा, पेपर 2 में अगर आ गया तो ये 3 मार्क्स का हो सकता है. ठीक है. मैथ में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर 2 में, वो आपके बहुत रेयर ऐसे होते हैं कि 5 मार्क्स के हों, लेकिन दे आर मोस्टली बिटवीन 3 and 4. ठीक है. एंड दिस इज इजीली गोइंग टू बी अ 3 मार्क क्वेश्चन. सो इट्स आस्किंग यू टू कैलकुलेट द अपर बाउंड of the area of the frame. अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये जो हमने सारी मेस मचाई है इसको जरा वापस हम आते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ वी नो वेरी वेल कि हमें जो शेडेड रीजन है उसका क्या चाहिए. फ्रेम जो है आपका वो शेडेड रीजन है, बाय द वे. ठीक है, लेट मी शेड इट फर्दर फॉर यू गाइस. वो ये रीजन है, इसका हमें चाहिए अपर बाउंड. अब अपर बाउंड निकालने के से पहले आप क्या करें, आप देखें इन थ्योरी हमें करना क्या पड़ेगा. ठीक है. सो थियोरेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा. थियोरेटिकली इफ यू वांट द शेडेड एरिया, SA is short for shaded area. ठीक है. What we will have to do is, what you and I will have to do is, we'll have to take the area of the larger rectangle minus the area of the smaller rectangle. ठीक है, ये करना पड़ेगा ना. ये larger और ये आपका smaller. इस तरह का अगर आप एक माइंड मैप बना लेंगे ना, then things are going to be a lot easier for you also. अब we want कि जो shaded region है उसका एरिया क्या हो, उसका एरिया ज्यादा से ज्यादा. Why? Because the question says that you want the upper bound. Now I always give one same example for questions like this, और वो है प्रॉफिट की एग्जाम्पल. अगर आपको अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है, so what are you going to do with the selling and the cost price? Selling price and the cost price. Yeah. So selling price बढ़ा देंगे, cost price reduce कर देंगे. Simple. ठीक है, you're going to increase the selling price. If you want to maximize profit, you're going to increase the selling price. You're going to lower the cost price. ठीक है. So let's apply the same concept over here. What bound am I going to take for the area of the larger rectangle? So you take the upper bound. I'll take the upper bound. And what bound am I going to take for the area of the smaller rectangle? The lower bound. I'll take the lower bound. ठीक है. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से I'll share this PDF with you guys. मैंने इसमें कुछ चीजें आप लोगों को लिखवा दी हैं. Although I strongly don't recommend कि आप वो रट के जाओ कि भाई इसका अपर तो इसका अपर, इसका लोअर, या इसका लोअर तो इसका अपर, इसका लोअर. ये मैं कभी नहीं रिकमेंड करता. I always recommend that you know take a minute, think about it कि आपको क्या चाहिए, और उस हिसाब से प्लान कि आप किसका अपर बाउंड लोगे, किसका लोअर बाउंड लोगे. ठीक है. ये मैंने यहाँ पे चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं, बट लाइक आई सेड इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप you figure it out there and then. So if I want the area of the larger rectangle, if I want the upper bound of it, yeah, outer rectangle, so that means I am going to, what dimensions am I going to use? Am I going to use 32.5 या 31.5? And 32.5 के साथ will I use 20.5 या will I use 19.5? बताएं जरा. Sir, 32.5. 32.5 and 20.5, yes. So I'll use 32.5
multiplied by 20.5 because I want the area to be, again, area is not an independent quantity. Okay, area doesn't exist of its own. It exists as a result of a shape having a length and a width. ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल जिसका हमें चाहिए लोअर बाउंड. सो उसकी डायमेंशंस आई एम नॉट गोना टेक 26, इन फैक्ट आई एम गोना टेक 25.5 एंड आई एम नॉट गोना टेक 14, in fact I'm going to take 13.5. So that means 25.5 multiplied by 13.5. ठीक है, so shaded area निकाल लें आप and let's see what you get. 32.5 into 20.5. It's 322. कितना? 322. Sorry, I thought you said 1500. Okay, anyway, my bad. Centimeter square. अच्छा देख लें पहले भी आंसर आया था हमारा. So great. अच्छा, so now there's one more example that I'd like to do with you guys. ठीक है, उसमें हम करेंगे वो speed वाली चीज. So let me just take that out for you guys. चलो, I'd like you guys to at least do the first part. ठीक है, और फिर हम part B करेंगे. फिर पार्ट ए का आंसर 9.45 है. सही है, बिल्कुल. Our A answer is in fact 9.45. Okay, now given that इसका आंसर आपने 9.45 निकाल लिया, now let's see what the question says. The question says calculate the greatest possible difference between the time taken by Sam and the time taken by Tom. अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात ये कि जो 60 मीटर्स आपको दिया हुआ है, let's see अगर इसका कोई यूज है. I think इसका कोई यूज नहीं है. नहीं. ओके, नाउ हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है द टाइम टेकन का ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस. ठीक है, नाउ अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक पॉसिबल ट्रैप क्या हो सकता है. एक पॉसिबल ट्रैप ये हो सकता है कि ये सैम का टाइम है ना. सही है, सैम के टाइम है 9.4. ठीक है, इसका अपर बाउंड हमने निकाल लिया 9.45 और फिर आ रहा है टॉम का टाइम. ठीक है, टॉम का टाइम है 8 सेकेंड्स. ना रिमेंबर ये है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड. दैट मीन्स अगर हम इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालेंगे तो 8.5 एंड 7.5 होगा. वाई? बिकॉज 1/2 का हम 2 वे स्प्लिट कर रहे हैं. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम 0.1 को 2 वे स्प्लिट कर रहे थे, विच इज वाई वी वर गेटिंग 0.05. ओके, नाउ अब दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर. ठीक है, क्योंकि आपने को क्या चाहिए? आपको सिर्फ डिफरेंस चाहिए. ठीक है, और डिफरेंस भी कौन सा वाला? आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस चाहिए. नाउ अगर हम सैम का लोअर बाउंड देखें तो सैम का जो लोअर बाउंड होगा वो होगा 9.35. इवन द क्वेश्चन हैज एन आस्क्ड फॉर दिस, बट लाइक आई सेड कि आप पहले से ही निकाल लें बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड इट. नाउ अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सिंस रिमेंबर व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज द डिफरेंस. ठीक है, मतलब हमें सिर्फ फर्क बताना है. वो इसमें हमें माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव का हमें वी डोंट नीड टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन. नाउ वन पॉसिबिलिटी इज कि मैं सैम का लूं अपर बाउंड और मैं टॉम का लूं लोअर बाउंड. ठीक है, so that I have what? I have the time difference. ठीक है, अब देखते हैं if I do 9.45. now this is a paper 1 question, so let's not use a calculator. 9.45 और इसमें से हम माइनस करते हैं 7.50.
तो 5 minus 0 is 5, 4 minus 5 can't be done, तो इसको 8 बनाते हैं, इधर 1 लगाते हैं, so 5 and 4, so that's 9, 8 minus 7 is, तो एक तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 1.95, ठीक है। अब let's just not settle with 1.95, हो सकता है 1.95 हमारा फाइनल आंसर ना हो सकता है इससे भी बड़ा कहीं डिफरेंस आ जाए। वो कैसे? वो ऐसे, अगर मैं लूं सैम का अपर बाउंड, ठीक है, सॉरी सैम का लोअर बाउंड, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, इसका लोअर बाउंड और इसका अपर बाउंड, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आई थिंक वी कैन स्ट्रेट अवे टेल के ये 1.95 से कम ही आएगा। सो लेट्स सी, 8.50 में से इनफैक्ट सॉरी 9.35, हाँ कम ही आएगा, 9.35 माइनस 8.50, 0 इसको हम बनाते हैं 8, 13 माइनस 5 इज 8, 0.80, हाँ। सो क्या हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है? सो बेसिकली जब मैं आप लोगों से कहता कि एक पॉसिबल ट्रैप क्या हो सकता है, एक पॉसिबल ट्रैप ये हो सकता है कि पीपल माइट एंड अप टेकिंग द अपर बाउंड ऑफ सैम एंड द लोअर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ टॉम एंड द लोअर बाउंड ऑफ सैम, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, बट दैट्स इनकरेक्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, ठीक है। अभी भी ये पहले तो मुझे बताएं, ये सवाल सबको समझ आया? देन आई नीड टू मेक यू गाइस डू अ स्पीड वाला क्वेश्चन। क्लियर सर। Let me look for a speed का question. चलो स्पीड वाला तो नहीं मिला, एक और अच्छा सवाल मिल गया, लेट्स डू दिस। This I would like you guys to try. Make sure you read the question carefully, ठीक है, और जिस तरह से मैं हमेशा से करता हूँ कि जो important चीज़ें हैं वो पहले से, obviously आप लोग underline तो नहीं कर सकते, but you know just make a note of it in your head and then solve. Okay, I'll give you guys 2 minutes, 2-3 minutes to do this. सर पार्ट बी में मसला हो रहा है वरना ये तो हो गया। चलें जरा पहले टेबल की वैल्यूज क्रॉस चेक कर लेते हैं। So it says the mass of a marble is given as 5.4 grams, correct to the nearest tenth of a gram, ठीक है। So 5.4 है, correct to the nearest tenth है, that means 0.1, so 5.4 है, 0.1 इसका upper bound कर लो तो 5.45, lower bound कर लोगे तो और सर 5.35 35, ठीक है। So as far as mass of one marble is concerned, so 5.35 and 5.45, ठीक है, pretty straightforward. Then it says the mass of a box is given as 85 grams, correct to the nearest 5 grams. So 85 है, 5 का मतलब ये 5 इसका अपर बाउंड हो जाएगा 87.5 और इसका लोअर बाउंड हो जाएगा 82.5। Very good. फिर आपसे कह रहे हैं find the lower bound for the total mass of the box and 20 identical marbles. अब box तो एक ही है ना, marbles कितनी है? Marbles 20 हैं। So that means अगर आपको total चाहिए theoretically, in theory आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा box plus 20 marbles, right? That's what you will have to do in theory. And you want the total to be as less as possible. Why? Because the question says that you need to find out the lower bound. तो आप क्या करोगे? आप box का भी कम से कम लोगे और marbles का भी कम से कम लोगे. That means you will take the lower bound of the box, which means 82.5, और marble का भी आप lower bound लोगे, which means 5.35, और आप इसको multiply करोगे 20 से। अब इसको sum कर लो। Calculator, this is a P1 question, so let's not use a calculator. खैर इसमें calculator की इतनी कोई शदीद ज़रूरत है भी नहीं। 5.35 को times 2 कर लो, ठीक है, the regular way.
So 2 times 5 is 10, 3 times 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 5 times सर ये 2. 107 आ रहा ठीक है, ये उसूलन 10.7 होगा, लेकिन क्योंकि हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 107 है। इसी 107 में आप 82.5 ऐड कर लें तो 0.5 9 8 पॉइंट, सो 189.5 आ गया आपका। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना कि इन थ्योरी हमें करना क्या है, ये वाला स्टेप आप लोग पहले से कर लेंगे तो आगे चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट डू यू वांट द अपर बाउंड, यू वांट द लोअर बाउंड। फिर ये देख लो कि अगर लोअर बाउंड चाहिए, देखो जब जहाँ चीजें सम हो रही होती है ना वहाँ तो चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। मसला वहाँ आता है जहाँ पे चीजें आपकी प्लस मतलब माइनस हो रही होती हैं, डिवाइड हो रही होती हैं, स्टफ लाइक दैट। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो लिस्ट आप लोगों को लिखवा तो देता हूँ, ठीक है, बट आई वांट यू गाइस टू ओनली रेफर टू इट व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है, या मे बी यू कैन रेफर टू इट इनिशियली एंड देन उसके बाद जब आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इसको किस तरह से यूज करना है तो यू नो देन यू कैन नॉट use the list. Okay, so let's say if a is equals to b plus c और आपको चाहिए a का अपर बाउंड, तो क्या करोगे? a का अपर बाउंड चाहिए तो b और c का क्या लोगे? अपर बाउंड, दोनों का अपर बाउंड लोगे। ठीक है, let me try and make a nice list ताकि और भी काम आ जाए। तो अगर a का अपर बाउंड चाहिए तो आप b और c दोनों का अपर बाउंड लोगे। ठीक है, फिर अगर आपको a का लोअर बाउंड चाहिए तो क्या करोगे? B और C का लोअर बाउंड। यप, दोनों का आप लोअर बाउंड लोगे। ठीक है, b का भी लोअर बाउंड एंड लेट मी स्पेस इट आउट स्लाइटली, और c का भी आप लोअर बाउंड लोगे। ठीक है, फिर if a is equals to b minus c, अच्छा sometimes what's going to happen is कि आपकी एक वैल्यू फिक्स्ड होगी। ठीक है, I'll tell you what I mean by that. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, 2 पता है, तीसरा निकालना है, तो तीसरा निकालने के लिए हम इन थ्योरी क्या करते हैं, हम 180 में से जो 2 गिवन होते हैं उनको सम करके माइनस करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू इन थ्योरी। तो अब द थिंग इज, अब आप 180 को नहीं चेंज कर सकते, सो 180 इज फिक्स्ड। लेकिन अगर दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे अभी हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन में किया था, तो फिर हम दोनों चीजों को चेंज करेंगे ऑफ कोर्स। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू वांट the upper bound of a, what are you going to do with b and c? B का अपर बाउंड और C का लोअर lower बाउंड। bound. Get b का upper bound and c का lower bound, good job. If you want the lower bound of a, तो क्या करोगे? B का lower bound और C का upper bound. Very good. Okay, now here when you have two values that are being multiplied, then also things are quite straightforward. If you want a का upper bound, तो क्या करेंगे, चलें आप लोग बताएं। दोनों का अपर बाउंड। यप, दोनों का upper bound। अगर a का lower bound चाहिए तो क्या करोगे? दोनों का लोअर बाउंड। दोनों का lower The lower bound. bound। अच्छा, now lastly अगर आपके पास है a is equals to b upon c, सही है, इस केस में ये देखते हैं आप लोग सही जवाब देते हैं इसका या नहीं। अब अगर मुझे a का अपर बाउंड चाहिए, so what am I going to do with b and c? B का अपर बाउंड और C का लोअर बाउंड। Yes, b का अपर बाउंड, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, so if you want the lower bound of a, then what are you going to B do? का लोअर बाउंड और C का अपर बाउंड। Very good, b का lower bound and c का upper bound। ठीक है, good job। Okay, so again this is a list that I want you guys to only refer to if आपका दिमाग बिल्कुल ही ना काम करे, although I hope you that never happens, but this is sort of like a fail safe। ठीक है, anyway ये कर लिया हमारा। अब हमारे पास we have a good 10-15 minutes, तो हमें काम करते हैं। Let's see what the next topic is, and हम लोग indices and standard form हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ algebra start करना था, ठीक है, so we'll do a bit of that, not complete तो नहीं करेंगे of course, but we'll do a bit of that।